Hello, students, and welcome to e-classroom of English. Once again, your English teacher Harpreet Kaur is here with you, but with a new topic, that is direct and indirect speech. So quickly open this chapter so that we can start the topic. So, girls, whenever we talk to someone, there are two ways to report that thing. So, we can express our thing in two ways. One is direct speech and one is indirect speech. But what? What is direct speech and what is indirect speech? Getting confused? No, I'll tell you. डायरेक्ट स्पीच इज सेइंग व्हाट समवन सेड अस विदाउट एनी चेंजेस. किसी ने जो हमसे कोई बात कही है या किसी और से कोई बात कही है, वी से इट एज इट इज़. हम उसे एज इट इज़ किसी के सामने जब एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? येस, द इन्वर्टेड कॉमास. सो using those inverted commas or quotation marks, we express or say the speaker's words as it is. We use the exact words of the speaker. जो भी कहने वाला person है उसने जैसा कहा था, we use the exact word of the speaker. Say suppose Ram said I am happy, so I will also say the same thing कि राम ने कहा था I am happy. So here I am not changing the words of the speaker. I am happy ही कहा है मैंने. But on the other hand, if I talk about indirect speech में we don't use quotation marks. Why we don't use quotation marks? Because we are not using the exact words of the speaker. Instead of that, we are expressing the same thing in our own words. हम अपने शब्दों में उनकी कही हुई बात को बताते हैं. अभी मैंने कहा था राम सर आई एम हैप्पी, बट इफ़ यू विल से द सेम थिंग इन योर वर्ड्स, हाउ विल यू से? राम सेड दैट ही वॉज हैप्पी. सो हियर यू आर एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग. आप वही बात बता रहे हैं बट यू आर यूजिंग योर वर्ड्स. आप अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. सो होप इट इज़ क्लियर. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डोंट यूज़ द कोटेशन मार्क एंड दे आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर. मीनिंग इज सेम जो स्पीकर ने कहा था. सो हियर इंस्टेड दे वी यूज़ द वर्ड दैट. कंजंक्शन दैट यूज़ करते हैं उस पार्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्पीकर ने कहा था. And then we change the tense also. चलिए, let us know more detail by comparing both the speeches, direct as well as indirect speech. How we can compare them? Direct speech में we use the exact word of the speaker, but in indirect speech what we do? We communicate the speaker's word. हम speaker के word तो communicate करते हैं, but without using the exact word of the speaker. हम speaker के exact words use नहीं करते. We use our words to express their feelings या express their words. Now, second point, quotation marks are used in direct speech. Direct speech में हमेशा quotation marks होंगे, but quotation marks are not used in indirect speech. Clear? Next is the words are said without any changes. कोई भी changes नहीं होते. As it is, speaker ने जो कहा, we express the same words. But in the, if I talk about indirect speech, what we do? We introduce the speaker's word, but by using that conjunction that लगाकर हम उनकी बात को express करते हैं, introduce करते हैं, and definitely we change it into past tense. Later on, we'll come to know about the rules also. Next is, if I talk about example, Hema said आई लाइक एप्पल्स. अब ये हेमा के वर्ड्स है, उसको एप्पल्स पसंद है, बट आप डायरेक्ट स्पीच में जब बोलेंगे यू विल से हेमा सेड आई लाइक एप्पल्स. तो आप हेमा तो नहीं है, आई लाइक एप्पल्स. बट व्हेन यू विल से द सेम लाइन इन इनडायरेक्ट स्पीच, आप अपने शब्दों में जब ये बात कहेंगे, हाउ विल यू से? हेमा सेड दैट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन द थर्ड पॉइंट, हम दैट वर्ड कंजंक्शन यूज़ करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो आई हैव यूज द सेम. हेमा सेड दैट शी लाइक्ड. वाई एम यूजिंग शी? आई क्यों नहीं कह रही हूँ? बिकॉज यहाँ पर आप बता रहे हैं कि हेमा ने कहा था, एंड हेमा इज़ अ गर्ल, सो विच प्रोनाउन आई एम गोइंग टू यूज? शी. She liked. I'm taking it into past tense as I told you earlier. Hema said that she liked apples. Now, moving further to know about more rules for changing direct from indirect to indirect. Okay, how we change. कैसे हम इसे change करते हैं? Usually when we change the verb, what we do? From present into past tense? Yes. जब भी कोई sentence direct speech में present tense में होगा, while changing into indirect speech, what we do? Yes, we change it into past tense most of the time. Usually 99% we take it to the past tense. Let us see the example. Janya said, I am going.
सो आई एम गोइंग प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, बट वेन एवर आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करूंगी, जानिया सेड एंड दैट तो मुझे लगाना ही है कंजंक्शन, जानिया सेड दैट शी गर्ल है तो आई विल से शी वॉज गोइंग पास्ट टेंस। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राज सेड दे लुक हैप्पी, राज सेड है लेकिन राज ने कहा है कि वो लोग खुश, ठीक है, वो खुश लग रहे हैं, बट यहाँ पर दे में वो खुद नहीं है, राज इन्वॉल्व नहीं है। सो वाइल चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राज सेड दैट दे लुक्ड हैप्पी, वो हैप्पी लग रहे थे। आई एम टेकिंग इट टू पास्ट टेंस। So hope it is clear. Now, if a sentence have a universal truth or a habitual action, in case में आप क्या करेंगे? If a sentence expresses a thing that happens every day, आपके जो habitual actions है, regular actions है, जो आप करते ही करते हैं रोज, habitual वाले हैं, जैसे कि यू टेक बाथ डेली, यू गो टू स्कूल डेली, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है लाइक अर्थ इज राउंड, सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। सो इन दैट केस वेन एवर वी यू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब भी आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, व्हाट यू विल डू, you will not change the tense of the words used in the quotation mark. quotation marks के अंदर जो words होंगे या फिर जो भी sentence होगा उसका tense आप change नहीं करेंगे. the tense will be as it is. pronounce change करेंगे but tense का उसका tense change नहीं करेंगे. how? let us know with few examples. my mother said sun is a hot ball of fire. so girls, sun आज भी hot ball of fire है, earlier also ऐसी था, and in future also it will remain the same. so it's a universal fact. So whenever I'll change this sentence, what I will do? My mother said that. और सारे commas and inverted commas remove कर देंगे. Said that और as it is sentence will be written. Sun is a hot ball of fire. इसको आप पास में नहीं ले जाएंगे कि sun hot ball of fire था. No, वो अभी भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा. So what? Yes, I'm not changing the tense. Next examples also proves the same fact. The teacher said earth is round. So it's also universal truth. So the teacher said that earth is round. Was नहीं करेंगे, आप इसे past में नहीं ले जाएंगे. That Harpreet ma'am told us कि we have to move towards the past tense always. No, it's an exceptional case. Whenever there are universal truths, whenever there are habitual actions, everyday actions, we don't change the tense into past. हम उसे past में लेकर नहीं जाएंगे. Hope it is clear to you. चलिए, do watch this video to have a best knowledge of this direct and indirect speech. Bye bye. Thank you.